अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। तुर्की और अमेरिका के दरमियान शाम में फौजी एक्शन पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को लिखे जाने वाले एक खत ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। अमेरिकी सदर की जानिब से इस खत में धमकी आमेज और गैर सिफारती जुबान के इस्तेमाल पर खुद अमेरिकी सियासतदान और तजियाकार भी हैरान है। तुर्की मीडिया के मुताबिक इस खत को, जिसमें तुर्की को शाम में जारी फौजी एक्शन ना रोकने की सूरत में इक्तिसादी पाबंदियों की धमकी दी गई थी, तुर्की के सदर रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं और अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। साथ ही साथ तुर्की के सदर ने अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो और नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात से भी साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी के आसार बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब तुर्की का फौजी एक्शन है, जिसके खिलाफ शाम में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले कुर्द और शामी हुकूमत अब इकट्ठे हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत खित्ते के वो ममालिक हैं जो तुर्की के इस एक्शन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी इसी कशीदगी के बायस मुलतवी किया। पाकिस्तान इस मामले पर तुर्की की हिमायत का दो टोक और वाज़ेह ऐलान कर चुका है। अगर नाज़रीन मसले कश्मीर की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान उन चंद रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने वाज़ेह अल्फाज में मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसालियत की कोशिशें भी की जा रही हैं। तुर्की के कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे जमाल खशोगी के जिस तरह से कत्ल हुआ उसके बाद, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है जिस तरह से किरदार एक अदा कर रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोनों ममालिक के हाल ही में दौरे कर चुके हैं, उस पर तुर्की का क्या मौक़िफ़ है, ये भी बड़ा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन है उस पर तुर्की का क्या मौक़िफ़ है और तुर्की और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का हल क्या होगा, इन तमाम सवालात और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान के मुलतवी होने पर मैंने आज पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर जनाब इज़्ज़त माब मुस्तफ़ा यर्दकल से तफसीली गुफ्तगू की, वो मुलाहिज़ा कीजिए। Mr. Erdogan was the president, Saab. He was supposed to come here, but all of a sudden his visit was postponed, and the situation in Syria, because of that, we will talk about that as well. But have you announced the next date, or you're just waiting for? Well, this, as you know, the two leaders, Mr. Erdogan and Mr. Imran Khan, they had a very good conversation back in New York, and those dates were envisaged for the visit of Mr. President Erdogan. But given the situation at hand, which needs momentarily attention now in the close vicinity of Turkey. There arose a need for us to postpone the visit. This has nothing to do with Pakistan. It was all the reasons that I just explained. And now we are working with the Pakistani side, to have an early future date for this visit to be a reality. And I'm sure that we will have it quite soon. Mr. Ambassador, when we talk about Syria, Turkey has been condemned, the actions of Turkey has been condemned, that, in fact called intrusion, and, some call it, onslaught on Kurds. What is the situation there now? And because of that, the tensions, the growing tensions between the US and Turkey, President Trump has written a letter in which, of course he always uses sometime, undiplomatic language as well, that he will destroy Turkey economy, etc., etc. So how are people responding to that in Turkey, and how would you respond to the allegations of human rights violation against Kurds? Well, the Operation Peace Spring, as we call it, is now underway for its 8th day. And the results we are getting are quite satisfactory. The objectives of this operation is multiple-fold. One is that we need to secure our border with Syria. This is very important for the safety and security of our
people. Because we have in the past witnessed border incursions from the terrorist groups finding refuge in Syria, be it ISIS, Daesh, or be it the PKK, YPG terrorists. And so this is a matter of national security for Turkey. The second is that, as you know, we are hosting almost 4 million Syrians in Turkey. We are the #1 country hosting refugees in the world. And I think it is high time for those refugees going back to Syria through this operation by which we will be clearing out a certain portion of Syria out of these terrorists and out of these oppressors, so that a number of refugees can find safe and secure zone to re-establish themselves back in Syria. For the letter or for the stance of America, what I can only say is that this is not a behavior that one ally can expect from another one. We are, Turkey and US, we are NATO allies more than 60 years. And we stood by each other thick and thin. The latest and biggest maybe demonstration of this was the 9/11 event. Immediately after 9/11, NATO, operationalized its Article 5, which calls for the mutual defense between the member states. One attack is considered an attack on all. And we supported that because we believe that this is how an ally should treat another one when it comes to matters of terrorism, fighting terrorism, and national security. What we are doing is for our national security, for the security of the Syrians. Your Excellency, it's you were saying you were seeing all this operation, etc. Very necessary for your national security. But this is not how the United States see it. They see it as thousands have been made homeless there. They see it as act of sort of extremism will increase on the border, and they see this operation as a threat for the Kurdish population as well. And because of that, if you see what President Erdogan has said yesterday, he has probably refused to meet Secretary Pompeo, who is traveling to Turkey. So this situation is, it's a growing threat for, of course, the international relations of, between you and United States. So where will be the end of it? Is there any mediation, anything that, any part that, any... First of all, let me, set the record straight. You talk about our Kurdish brothers. I use the word brothers on purpose because Turks and Kurds, like the rest of the population in our region, we have a history going back to 1,000 years. So what we are against, not the Kurds. We are living together with the Kurds. Turkey hosts the largest Kurdish population in the region. This is not an issue. We have been hosting 300,000 Syrian Kurds from the start of these events in Syria back in 2011-12. So they've also found refuge in Turkey. This is not about Turkey against one ethnic group or another one. This is about Turkey is against any terrorist organization. And PKK, YPG is a terrorist organization. This is registered in the US institutions. I mean, it is recognized as a terrorist organization, PKK. The European Union recognizes it, and its members recognize it as terrorist organization. So what we are again is putting up fight against a terrorist organization. This is what we need the world, the public opinion needs to understand. And during this operation, in the course of 8 days,
Do you know that we have received over 700 mortar shells coming from those terrorists from the other side of the border inside Turkey? And as a result, we have lost 20 civilians and we have over 170 injured people. The world public opinion, by and large, they do not want to see this side of the facts. But at this point, I should also, express my gratitude and thanks to the Pakistani government and Pakistani people for standing by Turkey in this throughout this operation. They understand very well our righteous cause, and we are grateful that they once again demonstrated this very strong bond between Turkey and Pakistan. All this situation is hurting Turkish economy. Like United States have imposed some, sanctions against key people in Turkey, and they've increased tariffs, etc. as well. And as President Trump has already said, we will destroy your economy. So, which way is going to go? Is Turkish economy that strong? I know Turkish nation is very resilient, but. Brother, we are a resilient nation. We demonstrated it, time and again over our thousands of years of history in the past. And the latest example was last year, when we have been subject to a financial attack. Remember August 2018. We have went through again a bottleneck time. You've been threatened for another financial attack. Threats, threats might be there, but what we are looking forward. When it is about national security, we do not have any concessions to give to anybody. And the support of the Turkish people to this operation and clearing out these terrorist elements is there. Being a resilient nation, being a strong economy, I have no doubt that we will overcome any hurdle, any obstacle that might be put on our way. I am confident. When we talk about Kashmir, not many countries are willing to publicly, openly condemn the human rights violation there and what's happening to millions of Kashmiris right now, because India is supposedly an emerging economy, it's a big market, but Turkey has always stood by Pakistan when it comes to Kashmir. Is it because of people's pressure internally in Turkey that they expect whoever the ruler is, or is it President Erdogan's own stance? The question of Kashmir, the Kashmir issue, time and again, for a long time, what we state through our statements and all those, public appearances is that, there is an issue there. This was even before Pulwama, because we also condemned Pulwama incident. We extended our, condolences to the Indian government. We do that because we have friend relations with India. But it was, I think, only Turkey when Pulwama happened, through our statements that, which underlined that there is an underlying issue to all those terrorist attacks or all those developments happening, and that's the Kashmir issue. And we are a long advocate of Kashmir issue to be resolved between India and Pakistan through dialogue and, under the guidance of the relevant United Nations Security Council. And of course, according to the will of the, people who are genuinely living there. This has been our stand. The fact that other countries shy away, putting similar positions is their problem or their issue. But being a diplomat from Turkey and a country who has gone through all those criticism when it comes to human rights by the European countries or by other Western countries, one at least expects a strong stance
from those human rights advocates when it comes to, you know, what's going on in the last 68, 69 days today. This is all I want to say about that. So, why do you think Turkey has been very clear about it? You know, very clear-cut stance on Kashmir, but rest of the international community don't seem to be following, you know, the basic principles of human rights when it comes to Kashmiris. Well, from the start of the interview, I think one of our basic points is, you know, going around the issue of double standards, my brother. I mean, treating an ally like, you know, some of the countries try to do out there is the best example of, you know, double standards. And I don't know the, you know, the depth of those other countries' relationship with, you know, between each other, the economic interests, the other interests, whatever. But when it comes to, you know, speaking the truths, Alhamdulillah, we have that tradition adopted for a long time now. And it is always our, how to say, showcase that we try to speak the truth no matter what. And this is what we are trying to do. When we talk about Prime Minister Imran Khan, he has been praised for the role he has played so far globally, although domestic challenges are, you know, still there, and he's trying his best to resolve this as well. How do you see him as you know, becoming a regional key player, mediating between different countries, and, you know, trying to resolve Afghanistan as well? How do you see him? You're an experienced diplomat. Thanks. Well, the appearance of Imran Khan in the United Nations has definitely had a very positive effect on the image of Pakistan, which is, by the way, in our view, from the Turkish point of view, is a very positive one. Because why I say this is that, you know, when you come across some news outlets here and there, whenever they mention the name Pakistan, always a, you know, connotation, a negative connotation follows it. As if it is a victim of terrorism for 15-20 years, we lost 70,000. Yeah. I know. That's why we understand each other. That's another reason. When you talk about double standards and ally, I go back to your argument as well, that they call you friends when they want you to be their friend, but they can leave you like they've left us. The image of Pakistan is a positive one, because everybody is talking about, you know, reflection of the positive image of Pakistan, etc. I sincerely believe that, you know, the genuine image of Pakistan is positive. You only need to come and see it by your own eyes. You know, the friendliness of the people, that hospitality, warmth. It is above everything else. And as you say, Pakistan also suffers a lot from terrorism for the last 40 years plus. So Imran Khan's stance on United Nations contributed to this positive image, I believe. And when it comes to his efforts for the wider region, it is only natural from my personal point of view that he is trying his level best to ease the tensions in the region, because the last thing Pakistan needs is another turmoil or another crisis in its region. So what he tries to do, I hope it might bring about some also positive results, is a very solid and, you know, very rational thing to do. Between Iran and Saudis, you're whomever it is, you know, between Iran and Saudi Arabia, or any other conflict that might be in question. Because my point is that, you know, this is only natural that Pakistan is trying to do. Imran Khan is trying to do what he's doing, because like everybody else, Pakistan also needs a secure and stable region. This is our common interest, and of course, first of all, Pakistan's interest. Your Excellency, I'm a very frequent traveler. Okay. I've been to Turkey a couple of times. Perhaps
one of the few countries where when you say you're from Pakistan, it's just the attitude completely changes. And it's every city you go to, every person you meet, child, whether, you know, young, you know, older people. What is the reason behind that? Is it the shared and common history taking us back to the Khalifa moment, you know, and after that as well? It's just very soft and positive image, and, you know, the response you get, the warmth and hospitality. You know, yeah, I mean, of course, history has a role to play in that. Also, you know, the social and cultural ties existing between this region and Turkey goes back to hundreds of years. So those are the issues or facts lying behind this brotherhood. But in the near history, especially during the, you know, last years of Ottoman Empire and the emergence of the Republic of Turkey, the Muslims in the, you know, Indian subcontinent, yes. What they have done for us, what they have spared for us, you know, as donations, as feelings. This is something that we will never ever be able to forget, the Turkish people. That's why we cherish the friendship of Pakistan. That's why this is always a living memory in our minds. My only prayer is that, inshallah, this will stay as it is for the generations to come. Inshallah. What can be done to further enhance and improve the ties between the two brotherly countries? There must be something that you come up with. Brother, we have a very good, you know, relations already. Basis. Yes. You talk about the social and cultural, you know, affinity. Our political relations has always been excellent. So it is high time that we cash in, if I may use this term, all those positive factors to a more intertwined economic, commercial and investment relationship between the two countries. We are determined to do that. And inshallah, what we have prepared for this, you know, upcoming or yet to be decided president's visit is that we will be signing a strategic economic framework document. This will encompass almost all areas of, you know, bilateral exchanges, economic, investment, potential areas of, you know, cooperation, cultures, all those issues. So that will provide us a very solid legal basis to move on. What I also can report to you is that the Turkish investors, they discover Pakistan by every passing day. The interest, the appetite on the Turkish investors are there. They are finding their, you know, ways to Pakistan, coming here, establishing themselves here, and this is a very good prospect that we wholeheartedly support, because Pakistan is a country which has an enormous potential. I know that you hear this word potential a lot, but it is a fact. Pakistan, with its population, young population, with its resources, with its geography, has a lot to offer. And Turkish investors are in line to make more use of these opportunities Pakistan is presenting. There was a talk of mutual TV stations to combat Islamophobia. What will be the mechanism? Who will be heading it? Because there is TRT already. So why is the need for there is a Pakistan television and there is? Well, you know, the idea, it was decided between the three leaders during their interaction in the United Nations. And I believe that it's the right thing to do, because coming up with the right narratives is very important in this age of information. Because, as you know, earlier we have discussed,
the image of the Muslim geography is not at its best, to say the least. So correct messages, correct reflection of our very deep cultures and very rich belief is very important, not only for these three countries, but for the rest of the Muslim geography and the entire world as well. So where we are at is that technical level discussions and meetings are taking place. So they will inshallah come up with some concept how to make this. So it hasn't been decided yet where the head office will be, and those technical discussions are ongoing. But what is important is that three leaders came to an understanding that we need an English TV channel to resonate how we feel about the world, what we think about these contemporary developments, how rich our culture, our religion, our ties are. So this will be a good amplification at the end of the day. And again, this is a very important initiative that we need to see through. TRT World has been facing some problems from Twitter and Facebook and a couple of other Muslim countries as well. Well, it is again a demonstration of the biased attitude coming from some particular corners around the world. I just cannot understand why TRT World, being a very prominent news outlet, is facing such difficulties. Because if you try to reach out to them in Twitter, for example, you can see that some of their tweets or the handle itself can be faced with restrictions. It's not easy to reach out to Facebook them. Has been doing the same? I do not know about Facebook, but Twitter, actually, but Twitter is the Twitter case is on the record. I also see it myself that there are some restrictions for the TRT World handle. What do you like most about Pakistan, apart from my TV program, which is Barri Baat? Of Pakistan, what I most like about Turkey also applies here. I mean, right. And it is everything. First and foremost, the hospitality of the people, the friendship, the affinity of the people at every walk of life. This is so heartwarming, and it is making me very proud and making me feel very privileged being the ambassador of Turkey in this country. The only disadvantage, I should say, is that after serving in Pakistan, and if I am posted somewhere else in the years or days to come, whatever, it will be difficult for me to adjust to that new posting, because it will not be the same like Pakistan. I don't think any other posting around the globe will make me feel the same way I am feeling now. Oh wow. Mr. Ambassador, it was an extreme privilege to have interviewed you. Thank you so much for your time. Thank you. I thank you very much for having me. Thank you. मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मार्च जैसे जैसे करीब आ रहा है, सवालात बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना साहब सिर्फ मार्च करेंगे या मामला धरने और इस्लामाबाद के लॉकडाउन तक जाएगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये ऐलान तो कर चुके हैं कि वो भी इस मार्च के हामी हैं, लेकिन क्या धरने में भी शिरकत वो करेंगे, ये वाज़ेह नहीं है अब तक। अगर मामलात माज़ाराई की जाने बढ़ते हैं, कशीदगी होती है, तो अपोजिशन किस हद तक मौलाना फजल रहमान का साथ देगी? और बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत जो पहले सख्त बयानात देने के बाद अब मुज़ाकरात की बात कर रही है, वो मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में किस हद तक जाने को तैयार है? गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद इस कमेटी के दीगर मेंबरान का फैसला अभी तक नहीं हो पाया।
ना अभी तक ये वाज़ेह है कि इस कमेटी का मैंडेट क्या होगा, ना ही किसी अपोजिशन जमात से अब तक रब्ता किया गया, जबकि मौलाना साहब के मार्च में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह चुके हैं। ऐसे में मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों जानिब से ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है जिसमें लचक दिखाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। मौलाना साहब इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि इन दोनों मुतालबात पर बात या मुज़ाकरात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना साहब का मुतालबा क्या है, इसके ऊपर भी एक थीसिस लिखना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। इतने चीख गवेरा तो अब मौलाना साहब है नहीं कि वो अपना सबूत जो है वो उनको जो है वो अपना ले रहे हैं, सलामियाँ ले रहे हैं। वो क्या है, उर्दू का मुहावरा है ना, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। सवाल यह है कि फिर बात किस बात पे होगी, और इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों से बातचीत करने में संजीदा भी है या नहीं। गुज़श्ता रात परवेज़ खटक साहब ने बड़ी बात में दो अहम बातें की। उन्होंने तस्लीम किया कि हुकूमत ने मुज़ाकरात करने में देर की, बहुत पहले ये मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए थे, और दूसरा ये कि हुकूमती वज़रा को हिदायत जारी की गई हैं कि उन्होंने जो पहले गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जारी किए जिसकी वजह से मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ हुए, अपोजिशन के बाकी रहनुमा नाराज़ हुए, उससे फ़िलहाल परहेज़ किया जाए। तो मैं तो क्योंकि इन सब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मुल्क के में जो मसले हैं या कोई ऐसे इश्यूज हैं हम उसको मिलकर हल करें। लड़ाई झगड़े से कुछ भी किसी का हाथ नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर देर भी हुआ तो मौलाना साहब बात करने से मुझे नहीं समझ कि सियासी आदमी बात ही करना छोड़ दे, कि जो लोग बयान देते रहे हमें ये बयान स्टॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि जब बात शुरू हुई है, क्योंकि जब एक दफ़ा झगड़ा शुरू होता है तो डेफिनेटली दोनों तरफ से कुछ सख्त बयान आते हैं। एक तो सियासत हमारी मुल्क की वैसी बन चुकी है। अब नाज़रीन, आपने परवेज़ खटक साहब को सुना। कल उन्होंने सिर्फ 24 घंटे अभी गुजरे हैं, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली, आपने खुद भी उनको सुना, वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ने सबको कहा है कि जी आप माहौल ठंडा रखने के लिए बयानबाजी से, गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी से परहेज़ करें। सियासी कशीदगी के माहौल में यकीनन बयानबाजी से परहेज़ किया भी जाना चाहिए, उसके बाद ही बातचीत का माहौल बन सकता है। इसके लिए दोनों अतराफ से लचक का मुजाहरा भी करना होगा, जो होता नज़र नहीं आ रहा। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के बयान के खिलाफ उनके आबाई इलाके स्वात मट्टा में मुजाहरा किया गया। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने बकौल परवेज़ खटक साहब के वज़रा को गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मना कर दिया है, उन्होंने आज खुद एक दफ़ा फिर वो किया जो उन्हें मौजूदा हालात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम वैसे फजल रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। और मैं इसके ऊपर मजीद और बात नहीं करूंगा। सिर्फ 24 घंटे बाद वज़ीर आज़म साहब जो थे, वफाकी वज़रा को जो तलकीन कर रहे थे, उन्होंने खुद वही कर दिया जो इस माहौल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बयानबाजी की सियासत में अगर मामलात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के हाथ से निकले तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जमहूरी रिवायात को मजबूत किया जाए, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए और बातचीत का दरवाज़ा बंद ना किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने माजी से कुछ सबक हासिल किया है, या एक बार फिर वही रवैया अपनाया जाएगा जिसमें सियासी पार्टियां हुकूमत में कुछ और कहती हैं और अपोजिशन में कुछ और। कल तक तहरीक इंसाफ के लिए धरना एक हक था, जमहूरी हक था, और नून लीग के लिए गैर आईनी इकदाम था। लेकिन आज दोनों की पोजीशन जो है, उनके पोजीशन के साथ साथ उनका बयानिया भी बदल चुका है। इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल हुकूमत ने मौलाना और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी का बाकायदा ऐलान कर दिया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शायद हुकूमत ने लचक दिखाई है थोड़ी बहुत, अगरचे मौलाना साहब ने मना कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। लेकिन बाल अगर देखें तो अपोजिशन और मौलाना साहब के कोर्ट में है। अगला लाए अमल आपका क्या होगा? जी, मैं तो इस पर हैरान हूँ कि वो वज़ीर आज़म जो अभी तक
ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने से बचने के लिए कौमी असम्बली की नशस्तों के दरमियान से फंसा कर आते हैं। जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल ताने हुए थे, वो तब भी ऑपोजिशन से की मीटिंग में नहीं आए कि कहीं उनसे हाथ ना मिलाना पड़ जाए। तो हमें तो उनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये किसी भी तरह संजीदा हैं ऑपोजिशन से बात करने में। कौमी असम्बली में उनका जो तरीक़ेकार है हमने देख लिया है कि वो बिल्कुल किसी भी तरह एक संजीदा कानून साजी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ना ही मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। उनकी यही कोशिश है कि वहाँ कोई ना कोई तकरीब ही रहे और मामला ना बढ़े। तो अगर वो बात करना चाहते हैं तो हुकूमत के पास ऑपोजिशन को इस बात पर लाने के लिए कि मुज़ाकरात हों कोई चीज़ नहीं है देने के लिए। या तो वो चलें, इस पर मैं सिफारिश करूंगा अपोजिशन से कि अगर हुकूमत ये कि जी हम बिजली के और गैस के रेट जो हैं वो 50% जो है कम कर रहे हैं, हम पेट्रोल के नर्क घटा रहे हैं, हम दवाइयों की कीमत घटा रहे हैं, फिर तो शायद बात हो सकती है। लेकिन जो सियासी मकासद है अपोजिशन के, उनका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो खुर्रम साहब आप 3 चीज़ों का जिक्र किया, बिजली का, पेट्रोल का और गैस का, अगर हुकूमत ये मुतालबे मानने के लिए तैयार भी हो जाती है जिसके इम्कानात कम हैं, तो क्या आप मौलाना फजल रहमान को भी मनाएंगे और वो भी दस्तबरदार हो जाएंगे धरने से और मार्चों से इस मुतालबे से कि वज़ीर आज़म को जो है वो मुस्ताफ़ी भी नहीं होना चाहिए? देखिए, सिर्फ ये मुतालबे नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है जो अवाम महंगाई और भूख में इस वक्त पिस रहे हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा है कश्मीर के इशू के ऊपर मुकम्मल तौर पर नाकाम सफारतकारी है। 27 सितंबर को एक यूएन में तकरीर करके समझ लिया कि शायद पूरी दुनिया फतह हो गई, फतह नहीं हुई। कश्मीर के अवाम उसी तरह बिलक रहे हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की सपोर्ट अभी तक जो सीरियस सपोर्ट है वो हासिल नहीं हुई। उसके आगे चलें तो हम नज़र आ रहा है कि कम से कम सूबा पंजाब में जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गई है। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ जो मिलती थी वो ख़त्म हो गई, टेस्ट होते थे वो ख़त्म हो गए, यहाँ तालीम की सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हो गई। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में डेवलप किया था वो रिपेयर ना होने से टूट रहा है। तो वहाँ भी हुकूमत को भी अपना काम दिखाना है। उसके आगे जो है हमारा बहुत बड़ा मुतालबा मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर कि ये जो इंतकामी गिरफ्तारियाँ हैं इनको एहतसाब कहना ज्यादती होगी। ये सिर्फ इंतकामी गिरफ्तारियां हैं, चाहे वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप गौर फरमाइए कि मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के तीनों जो बेटे हैं उनकी औलादें जेल में हैं। मरियम नवाज जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, यूसुफ अब्बास जेल में है। उसके आगे चलें तो हमारे सामने शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, सेनेटर कामरान माइकल हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं। इन लोगों की गिरफ्तारियां अब ख़त्म होनी चाहिए। 3-3 महीने हो गए अदालतों से इस्तदा करते हुए कि जी कोई सबूत तो दें, कोई सबूत नहीं है। हमारा यह भी मुतालबा है और हमारा आखिरी मुतालबा आपसे मुतलका है कि जिस तरह मीडिया के ऊपर एक बदतरीन सेंसरशिप हो रही है, चलते हुए प्रोग्रामों को रोका गया। पहले मरियम नवाज के चलते प्रोग्राम को रोका गया, आसिफ जरदारी के चलते प्रोग्राम को रोका गया, और कल एक चैनल को कहना पड़ा टीवी पर आकर कि जनाब हम मौलाना फजल रहमान को इसलिए नहीं दिखा सकते कि हम हमारे ऊपर। अच्छा नहीं खुर्रम साहब, देखें, एक तो आपने जो पैमरा वाली बात की, पाबंदियों की बात की, एग्जैक्टली यही सवालात कल मैंने परवेज खटक साहब के सामने रखे जो आपने मीडिया के बारे में कहे। उनसे मैंने यही कहा कि जी आपने इतनी जो पाबंदियां आप पर इल्जामात लग रहे हैं, कैसे आप मौलाना फजल रहमान एक तरफ टीवी पे नहीं आ सकते, दूसरी तरफ आप मुफाहमत या मुसालत की कोशिशें उनसे करेंगे? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम इस बारे में गौर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये पाबंदियां हटें। और दूसरी चीज़ जो है वो अंदरूनी चैलेंजेस में हुकूमत को कई मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर कॉज की आपने बात की, इस हवाले से हुकूमत की कोशिशें जो हैं उन्हें मस्बत पजीराई भी हो रही है। आज हमने तुर्क सफ़ीर का इंटरव्यू किया तो उनकी भी यही राय थी कि इमरान खान ने मस्बत किरदार अदा किया है। तो आप क्यों मुतमईन नहीं है इमरान खान के कश्मीर कॉज पर? देखिए, असल में तो जो सफारतकारी है वो तकरीर का कोई अखाड़ा नहीं है। वहाँ हमने ये देखना है कि अब तक 5 अगस्त से आज 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर हो गई है, क्या पाकिस्तान किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद लाने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ? किसी भी फोरम की तरफ से कोई ऐसी करारदाद आई है जिसने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को एक बार फिर असर्ट किया हो? ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, वहाँ कोई सवाए एक तकरीर के कोई काम नहीं हुआ। चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, मुझे याद है 15 अगस्त को एक गैर रस्मी मीटिंग हुई थी, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने कश्मीर का नाम तक नहीं सुना, अभी इतने दिन हो गए। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो OIC है,
जिसमें जब इस्तांबुल में 2016 में सदारती इजलास हुआ था तो कश्मीर के उस एलानिया में कश्मीर के ऊपर 6 जामे पैराग्राफ थे, जो अब आके इस साल मई में जब मक्का में कॉन्फ्रेंस हुई तो एक रह गया। तो हमें कहीं भी तरफ से अभी तक वो सफारती सपोर्ट हासिल नहीं हुई। अगर तुर्की हमारा एक दोस्त वाकई बरादर मुल्क है, वो हमें सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि बाकी दुनिया को कन्विंस करने में ये पीटीआई की हुकूमत यकसर नाकाम हुई है। और अब तो ये देखिए 27 सितंबर की तकरीर के बाद वो हमें कोई कश्मीर की हरकत करते हुए भी नजर नहीं आ रहे कि वो ये कहें अच्छा जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद लेकर आएंगे। एक खामोशी से छा गई है कि सिर्फ एक तकरीर जो है वो तमाम मसलों का और कश्मीरियों के जो गहरे जख्म है उनका हल था। चले खुरम साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोग पोजीशन जो है वो कश्मीर कॉज के वैसे ही पीछे पड़ गई है। मैं वापस उसी तरफ आता हूं, कल आप लोगों की बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। मुमकिन तौर पर यह इम्कान है कि आप ऐलान कर देंगे मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे मिलकर। क्या अभी तक तय पाया है कि आप धरने में बैठेंगे या सिर्फ आज़ादी मार्च में जो है वो शिरकत करेंगे? कुछ आइडिया दे सकते हैं? जी देखिए, आपको मालूम है कि हमारी एक टीम जो है मोहम्मद नवाज शरीफ का ख़त लेकर मौलाना के पास भी गई थी। कल वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। तो उसमें गालिब इम्कान तो यही है कि मुस्लिम लीग नून अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक इस धरने को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। उसमें ज़रूरी नहीं कि धरने में हम बैठें भी, लेकिन उसमें जो उसकी जलसे होंगे, तकारीर होंगी, अवाम का जो उसके अंदर शामिल होना होगा, वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हम शमूलियत करेंगे इस प्रोटेस्ट में। क्योंकि ये जो हुकूमत है ये हमें नहीं भूलना चाहिए चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में। अच्छा खुरम साहब, जहां तक मैं समझ पाए तो आप धरने को सिर्फ सपोर्ट करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो ये तो सिर्फ इखलाकी मदद होगी जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह का ऐलान किया हुआ है। जी नहीं, हम आएंगे वहाँ, हम आके उस जलसे शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। वो आकर जो है रोज़ाना जो उसके अंदर जो एक्टिविटी होगी उसका हिस्सा होंगे। तो हम इसको बहुत सीरियसली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कल परवेज खटक साहब ने हमें ये बताया कि वो मौलाना साहब और बाकी अपोजिशन से भी बात करेंगे। कोई अभी तक किसी किस्म का रब्ता हुआ है? क्योंकि उन्होंने आज भी ये कहा कि हमारी बातचीत का आगाज़ हो गया है। मैं ये बताना वो नहीं चाहते थे कि किससे हुई है, क्या हुई है, कब हुई है। कुछ इतलात हैं आपके पास नून लीग से, कोई राब्ते? देखिए, अभी तक तो कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। उन्होंने गालिबन, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, शायद हमारे कुछ सीनियर लीडरान को कोई फ़ोन किया हो, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात अभी तक मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान बाकायदा तौर पर बिल्कुल ठीक है। खुरम साहब, अगर ये भी बता दीजिए कि आपका प्लान बी और सी क्या होगा बिलफर्ज अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, माजराई शुरू हो जाती है, फिर क्या होगा? क्योंकि जाहिर है ये कुछ हुआ तो मुल्क का नुकसान होगा, फिर वही बातें होंगी जो आपके दौर में भी हुई थी कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो ये हुकूमत भी कहीं ये आखिर में ना कहे कि जी मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ नहीं कर रही। मुल्क का नुकसान, अगर मैं आपको आज की खबर सुनाऊं कि पूरे मुल्क में आटा मज़ीद महंगा हो गया है, और ये उसके बाद है जब पूरे मुल्क में अशियाई खुर्दोनोश जो हैं वो मुतवसत तबके की पहुंच से भी बाहर होती जा रही हैं। असल खबर ये है, और जब ये एहतजाज होगा और उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां करने की कोशिश की तो फिर आप देखेंगे कि जो अवाम पहले ही तंग आई हुई है उसके ऊपर अगर इस तरह के पहाड़ टूटेंगे तो अवाम आज खुद बाहर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनको बाहर निकालेगी, क्योंकि इस किस्म की जो एक मैं कहूँगा डबल पॉलिसी फेलियर हो रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद में जहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इन्हदाम है, कलैप्स है, उसी तरह लोकल सतह पे भी इन्हदाम है कि ये वो लोग हैं ना उनको रोटी मिल रही है, ना उनको मुफ्त दवाई मिल रही है, ना उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम मिल रही है। तो वो फिर जब हुकूमत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो फिर एक लावा उबलेगा जो शायद किसी के कंट्रोल में ना। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।